Start. Hello. Good evening, everyone. Welcome back. So I'll be taking up the Indian geography portion today, and a lot of initiatives of OnlyIAS, like the program Udan. There'll be budget session, and there'll be marks booster session for the mains examination. And along with this, the geography, tomorrow you'll be having the places in the news. And after that, on 5th and 6th, okay, I'll be taking your sessions. And these are the various initiatives we talked about. And the foundation course has already begun. It's running on the CTR model. So more details regarding this, you can see on the website. And these are the classrooms you can see here. So it's a state-of-the-art technology with all digital boards, and you also have the camera access. So along with this, a lot of optional subjects will also be taken up. That is sociology, geography, anthropology, public administration, PSR, and also Hindi literature. And आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी मिलेगी यहाँ पे. And mind maps भी create किए जाएंगे so that you can remember things very easily. So along with this, CSAT classes will also be offered. And टेस्ट सीरीज जो भी आप पढ़ रहे हो, ओके, आप कितना रिमेंबर कर पा रहे हो, कितना एप्लीकेशन कर पा रहे हो, सो उसके लिए टेस्ट होगा टाइम टू टाइम बेसिस पे. एंड आपके लिए पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग प्रोग्राम भी यहाँ पे होगी. ओके, एंड देयर आर मेनी मोर इनिशिएटिव्स. लेट्स जंप इनटू द इंडियन ज्योग्राफी पार्ट हियर. सो इंडियन ज्योग्राफी. So in the Indian geography, the major questions regarding the prelims, okay, they'll be from Indian physiography part, and then Indian climate, okay. So in Indian climate, here it can be divided into two portions. That is, the main application based questions will be from monsoons, okay, and the forests and the life. So from the monsoons, again the questions can be expected from water and water related aspects, the water and drainage pattern. So here the questions of more of environmental in nature, right? ये हो गया इंडियन क्लाइमेट रिलेटेड. देन क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम द मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज. सो दिस आर द इंटीग्रेटेड टॉपिक्स. तो जब तक आपको मिनरल का लोकेशन पता नहीं है, आपको इंडस्ट्रीज के बारे में भी पता नहीं होगा. And then other miscellaneous topics will be there regarding the waterways, okay, soils, okay, and other places in the news. So I'll be majorly discussing the physiographic part, actually the conceptual part of the physiography of India. Now, regarding the Indian physiography, so this is divided into various parts, okay. So these are also called as the geological divisions, okay. It will be based on the types of the rocks. So here you have the Northern Mountain Complex. तो यहाँ पे सिर्फ हिमालय ही नहीं है, हिमालय के साथ साथ बहुत सारे माउंटेन्स है. दिस इज कॉल्ड एज द नदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स. एंड देन यू हैव द नदर्न इंडियन प्लेन्स आएंगे,
And also you have coastal plains, northern Indian plains and coastal plains. The second part, basically these physiographic divisions are based on the type of the rocks which are present. So these are made of the sedimentary rocks of marine origin. Sedimentary rocks of marine origin से बना है. We'll discuss what is this. And this is made up of the sediments, just sediments. These are not sedimentary rocks. And then you have the island territories. Island territories. That is the Lakshadweep and the Andaman Nicobar. And the fourth physiographic division is the peninsular plateau. Peninsular plateau. So these are the various physiographic divisions. Okay. Okay. Yes, yes. Okay. Hindi में भी बताऊंगा. Okay. Pritam. Yes, from Kolkata. Very good. Okay. Now, पहले discuss करेंगे as sedimentary rocks of marine origin. So, सबसे पहले you had only this peninsular plateau part. Peninsular plateau. And ये peninsular plateau बहुत दूर था. Okay. So यहाँ पे you had Eurasia and दोनों के बीच में you had 33 सी, दोनों के बीच में सी था. So now, if you want to start the history, okay, of this peninsular plateau, so initially this peninsular plateau was part of the Gondwana land, okay, and Gondwana land में you had South America, Africa, Madagascar, India, Australia, Antarctica. So इतना पीछे नहीं जाऊंगा मैं, थोड़ा okay, I will start our story. हम शुरू करेंगे 118 million years. So 118 million years ago. So this was Madagascar. ये था Madagascar and इस तरफ है Indian Peninsular Plateau. And at that time, India was near the reunion hotspot. Okay, आज की पोजीशन इंडिया की ये है, लेकिन पहले इंडिया कहां पे था? इंडिया यहां पे था, माडागास्कर के पास, यहां था इंडिया. एंड यहां पे a reunion hotspot located. Reunion hotspot. And the Indian Peninsular Plateau is traveling in northern direction. So एक गोंडवाना से टूट के ऊपर की तरफ आ रहा था. जब ये ऊपर की तरफ आ रहा था, then the reunion hotspot, it has created rifting. वो क्या क्रिएट किया? एक रिफ्ट क्रिएट किया, तोड़ दिया इंडिया को दोनों में. ओके, इट्स लाइक यू हैव ए हॉक्सॉ ब्लेड, जैक्सॉ ब्लेड, and you are putting a wood under it. So this hotspot is able to crack and it has been split into two. So यहाँ पे एक रिफ्ट क्रिएट हुआ एंड जो इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो टूट गया दो पार्ट्स में. It is broken into two parts. एक हिस्सा समंदर के अंदर गिर गया. This part, okay, fell into the ocean because of divergence. So you can see here, ये जो light blue portion में दिख रहा है ना, this was the part of the peninsular plateau, but it is broken from the peninsular plateau and fell into the ocean. So that's why you have a broad continental shelf on the western side.
एंड जब ये क्रैक आया था, जब ये डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री क्रिएट हुआ, तभी ना ये डेक्कन लावा ट्रैप्स प्रोड्यूस हो गए. सो इट हैज क्रिएटेड द basaltic eruptions which has given rise to Deccan lava traps. And these Deccan lava traps have given rise to black soils. अगर आपको soils भी समझना है ना, आप इसी से समझ सकते हो. Black soils means before this, इससे पहले जब ये Deccan lava traps नहीं थे, पूरा peninsular plateau, it is made up of hard granitic gneissic rocks. It is made up of granitic gneissic rock से बना हुआ है. मीन्स ये पूरा रेड सॉइल का पार्टी था, हर जगह रेड सॉइल था 118 मिलियन ईयर्स पहले. ओके, 118 मिलियन ईयर्स के बाद क्या हुआ, रेड सॉइल के ऊपर ब्लैक सॉइल्स आ गए, ब्लैक कॉटन सॉइल्स. ना आपको इससे सॉइल्स भी समझ में आ जाएगा. अभी क्या है, ये पूरा रेड सॉइल का पार्ट है, राइट. रेड सॉइल के ऊपर ये ब्लैक सॉइल आ गया, ब्लैक सॉइल. एंड देन ऊपर हियर यू हैव यूरेशिया, यूरेशिया. एंड बीच में क्या है, बीच में 33C है, बीच में 33C. So the 33C is nothing but a geosyncline. It's a geosyncline. So when this Indian peninsular plateau, when it was moving towards Eurasia, okay. Already when the 33C subduction was taking place, the melange has created, okay, यहाँ पे जो sediments होते हैं, they uplift होके, it has formed mountains, and because of this subduction of the 33C, okay, volcanic mountains also have been formed. Okay, so this was done when 33C was still there. ये 33 sea floor है, इंडिया है. Okay, and this is kind of OC-CC collision. OC-CC collision का example है, right? Now these are Andean type of mountains, okay, and today they are called as Trans Himalayas. आज इनको बोलेंगे Trans Himalayas. Okay, so इसका examples क्या है? You have Karakoram, Ladakh range, and Janskar. Karakoram, Ladakh, Janskar. क्यों इनको ट्रांस हिमालयस बोलेंगे? बिकॉज ओके, नाउ अगेन कृष्णा, ओके, नॉट ऑल द ट्रांस हिमालयस हैव वोल्केनिक रॉक्स. सो विद इन ट्रांस हिमालयस, कैराकोरम में you have a range called as Rakaposhi range. Rakaposhi range has volcanic rocks. Not all the Trans Himalayas will be having volcanic rocks. तो सबसे पीछे जो माउंटेन रेंज है उसमें होगा volcanic rocks. ना इसके बाद क्या होगा? बीच में जितने भी सेडिमेंट्स है, बीच में भी जितने भी सेडिमेंट्स है, 33C सेडिमेंट्स, अभी 33C खत्म हो गया. Those sediments are uplifted. Okay. एंड ऑलरेडी आपके पास क्या है? ये ट्रांस हिमालयस है. These are the ट्रांस हिमालयस. एंड ये है, ये ग्रेट बनेगा एंड ये मिडिल हिमालयस बनेगा.
Great and Middle Himalayas. And this is Eurasian Plateau. This is Eurasia, and this is Indian Peninsular Plateau. But the formation of the Himalayas is not this simple as it seems. इतना आसान नहीं है फॉर्म होना. Actually क्या हुआ? Generally क्या होना चाहिए? जब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट भिड़ता है ऐसे भिड़ेगा, राइट? दिस इज सीसी एंड दिस इज सीसी. लेकिन क्या हुआ, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना थोड़ा नीचे चला गया एंड यूरेशियन प्लेट्यू थोड़ा ऊपर आ गया. सो क्रस्ट ओवर ए क्रस्ट. सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डबल क्रस्टिंग. डबल क्रस्टिंग. सो डबल क्रस्टिंग इज द रीजन वाई अब दुनिया में कहीं पे भी देखो, हिमालय जितना बड़ा माउंटेन रेंज कहीं नहीं मिलेगा आपको. दो द एल्प्स, रॉकीज, एंडीज, हिमालयस ऑल बिलोंग टू द सेम एज. चारों ही माउंटेन रेंजेस टेरिशरी एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं. फिर भी हिमालय जितना हाइट बाकी के माउंटेन रेंजेस में नहीं है. क्यों? बिकॉज यहां पे डबल क्रस्टिंग, एक क्रस्ट के ऊपर दूसरा क्रस्ट चढ़ गया है यहां पे. सो दिस इज डबल क्रस्टिंग फिनोमिना. So double crusting is the reason why the Himalayas have an imposing elevations, and this is also the reason why the Tibet अभी यहां पे लोकेटेड है. अब तिब्बत की अगर एवरेज हाइट देखो, ये 4 किलोमीटर के हाइट में है. ओके, अगर ये डबल क्रस्टिंग नहीं होता, जितना हाइट तिब्बत की होती उतना ही हाइट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का होता. दोनों सेम रहते, लेकिन अभी क्या है, अभी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स यहां पे है, लोअर एलिवेशन, तिब्बत एट हायर एलिवेशन है. एंड बाद में देखेंगे हाउ तिब्बत इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन मॉनसून्स. एंड यहां पे यू हैव दिस ट्रांस हिमालयस, ये है ट्रांस. एंड अब ग्रेट हिमालयस का स्ट्रक्चर देखो, द ग्रेट हिमालयस विल बी हैविंग ऑर्थोक्लिनल फोल्ड. This is also called as hog back structure. Now इसका orthogonal fold क्यों है? क्योंकि ये डबल क्रस्टिंग हुआ है. This is called as under thrusting. Phenomena is also called as under thrusting. That is the Indian plate थोड़ा नीचे घुस गया. And the middle Himalayas, okay, have such kind of a fold. The middle Himalayas have a lot of asymmetrical folds. A lot of asymmetrical folds, and great Himalayas have the orthoclinal folds. Now, what all MCQs can be asked, okay, from this Himalayas? Now, अभी जो शिवालिक्स बनेंगे ना, the shivaliks are made up of debris. The shivaliks में actual fold mountains है ही नहीं है. They are not real fold mountains. They are not orogens. ऊपर से जितना भी मिट्टी गिरा, ऊपर से जितना भी debris गिरा, because of the compression it has been uplifted and the shivaliks have been formed. The shivaliks are the uplifted alluvial fans. They are not real fold mountains. Whereas the middle Himalayas and the great Himalayas will be having the structural folds. And the middle Himalayas will be having numerous asymmetrical folds, and middle Himalayas are also undergoing very heavy compression. So right now all the forces, अभी जितना भी इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, दोनों की जो ताकत है ना मिडिल हिमालयस पे लग रही है. इसलिए मिडिल हिमालयस विल बी फॉलिंग इन जोन 5 ऑफ द अर्थक्वेक्स. हाईएस्ट अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड आपको मिडिल हिमालयस में पाए जाते हैं. एंड अभी जो ग्रेट हिमालयस है, इसका जो
ये ऑर्थोक्लिनल फोल्ड है. ऑर्थोक्लिनल फोल्ड मींस ऊपर 90 डिग्री होता है. एंड इसका आप एलिवेशन देखो, अगर द ग्रेट हिमालयास आर स्टीप ऑन द सदर्न साइड, मींस इंडिया की तरफ ये स्टीप होगा, एंड तिब्बत की तरफ ना एक ग्रेजुअल होता है, ग्रेजुअल. तो आजकल अभी माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सीजन है. सो माउंट एवरेस्ट को किस तरफ से चढ़ा जाता है? Whether it is climbed from this side, that is Indian side, or southern side, or from the northern side. Northern side से चढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे elevation उतना नहीं होता, and such kind of a fold is called as, okay, the orthoclinal fold. Yes, जोशीमठ का land, okay, subsidence जो है ना, that we'll discuss tomorrow along with the locations, वो कल discuss करूँगा मैं. And इसके beyond क्या है? इसके beyond है the Trans Himalayas. The questions can be asked. Okay, are Himalayas completely made of the marine sediments only? Nahi. So Himalayas में you also have granitic gneissic rocks. ये पूरा ही marine sediments से बना नहीं है, क्योंकि जब ये Indian plate and the Eurasian plate जब एक collide कर रहे थे, okay, Indian plate and Eurasian plate ये तो granite से बना हुआ है. जब एक दूसरे से वो टकराएंगे, उसके थोड़ा बहुत particles टूटेंगे और टूट के हिमालय में भी अपलिफ्ट हो जाएंगे. एंड दिस ग्रेनिटिक gneissic रॉक्स विद इन द हिमालयास, इट इज कॉल्ड एज द सेंट्रलाइन क्रिस्टल एक्सिस. ओके, सॉरी, सेंट्रल क्रिस्टलाइन एक्सिस बोलेंगे उसको. सो दिस आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द हिमालयास. सो दैट्स व्हाई the most of the peaks, highest of the peaks in the world are located within the Himalayas. Now, Himalayas में एक structural bend है, syntaxial bend है. So, that is called as the Nanga Parbat in the east and Namche Barwa in the east and Nanga Parbat in the west. So, why these syntaxial bends have been formed? Because this is the Indian plateau and this is Eurasia, and बीच में क्या था? 33 सीता and 33 sea sediments थे. So here you had the 33 sea sediments. So जब तक 33 के अंदर सीस होंगे ना, ऐसे sediments होंगे, just soft sediments, and Indian Peninsula Plateau and Eurasian Plate are made up of hard rocks. Imagine करो, okay, आपके बीच में आटा है, okay, and आप ऐसे प्रेस कर रहे हो. जब आप प्रेस करोगे क्या होगा? If soft sediments जितने भी है इस साइड से आ जाएंगे, तो दोनों hard rocks के बीच में अगर soft sediments फंस रहे हैं, then they'll come out like this, ऐसे बाहर आ जाएंगे. So this is the reason for the syntaxial bends. Okay, and the syntaxial bends are located here and here. तो इस तरफ है नामचे बरवा एंड इस तरफ है नंगा पर्वत. अगर आप यहाँ पे देखो लोकेशन ऑफ द हिमालयास और द बेंट ऑफ द हिमालयास, तो आपका ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा. ओके, तो यहां पे है नामचे बरवा, इस तरफ है नंगा पर्वत. Okay, this is about the syntaxial bends. And what is the age? The age of the Himalayas. The age of the Himalayas, okay, around 65 million years. Also, we can say that they belong to the tertiary age. And they're also called as the Alpine Fold Mountains, because they have been formed along with the Alps. That's why they are called as the Alpine Fold Mountains. So these are some of the features of the Himalayas. Okay. So all the important points I have mentioned here. So next we'll discuss about
द नदर्न इंडियन प्लेन्स. सो नदर्न इंडियन प्लेन्स कहां से रेंज करेगा? सो नदर्न इंडियन प्लेन्स, ओके, दे स्टार्टिंग फ्रॉम ये पूरा नदर्न इंडियन प्लेन्स का पार्ट है. ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान में भी है. So it is divided into the Indus Plains and Gangetic Plains and Brahmaputra Plains. तीन पार्ट्स में डिवाइड किए जाएंगे. Now, if you talk about the Indus Plains are further divided into two plains. तो जब भी आपको एग्जाम में इंडिया का मैप ड्रॉ करना है, आप सिंपली ये वाली आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो. ओके, इससे आपको इंडिया का पोजीशन पता चलेगा. राइट, ऊपर का हिस्सा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज इससे आपकी काम बहुत ही सिंपली हो जाता है. ओके, ऐसे आउटलाइन ड्रॉ कर दो. नाउ इंडस प्लेन्स में या सिंध प्लेन्स नीचे है एंड उसके ऊपर पंजाब प्लेन्स. पंजाब प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स में along with the river Indus you have 5 tributaries, that is Jhelum, Chenab, Ravi, Bias and Satluj. Okay, these are the 5 tributaries and this is Sindh. Okay, now इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर है हिमालय. ये पूरा हिमालय से. Now let's start with the Sindh plains and the Punjab plains. तो सिंध प्लेन्स में बारिश कम होती है. They have less rainfall because there is no barrier. Because Indian subcontinent में जितना भी रेनफॉल होता है ना, okay, it is orographic rainfall, means जहां पे पहाड़ है वहां पे रेनफॉल होगा. तो सिंध प्लेन्स में रेनफॉल कम है. पंजाब प्लेन्स में you have more rainfall. And because of more rainfall plus the rivers, the Punjab is one of the rich provinces of Pakistan. तो जैसे अपने तरफ पंजाब में रिच एग्रीकल्चर है, तो पाकिस्तानी पंजाब में भी रिच एग्रीकल्चर है. So when you have rich agriculture, you'll also have rich politicians. So that's why in Pakistan, the Punjabi politicians play a dominant role. They dominate the the politics of the Pakistan. Then comes the Sindh. अभी सिंध क्या है? सिंध is famous for business. सिंधीज सुना होगा आपने. सिंधीज किसके लिए फेमस है? बिजनेस करते हैं बहुत सारा. क्यों? बिकॉज आपके पास रेनफॉल कम है, ड्राई लैंड है. अब क्या करोगे? एग्रीकल्चर तो नहीं कर सकते हो, इसलिए बिजनेस करते हैं. लेकिन सिंध प्रोविंस में एक अच्छी बात यह है कि जब आपके पास ड्राई लैंड होता है, अगर आपके पास इरिगेशन है, मीन्स ऊपर से रेनफॉल कम है लेकिन इरिगेशन मिल रही है, आपको नीचे से पानी मिल रहा है, बिकॉज यू हैव इंडस रिवर हियर. बिकॉज ऑफ द इंडस रिवर द इरिगेशन इज पॉसिबल. then you will grow best of the cotton. That's why the Sindh region of Pakistan, it grows very good cotton. ये देखो यहाँ पे ड्राई रीजन है, यहाँ पे अच्छा कॉटन ग्रो होता है. एंड वर्ल्ड में कहीं पे भी ड्राई रीजन होगा ना, वहाँ पे बहुत अच्छा कॉटन ग्रो होता है. ओके, सच एज द सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान, ये वाला पार्ट, द जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, यमन ये भी ड्राई है, सोमालिया ड्राई है, इजिप्ट अगेन इट इज ड्राई. सो हियर बेस्ट कॉटन ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो grown. So this is about Sindh and Punjab. Next come to the Gangetic Plains. So the Gangetic Plains of India are further divided into 3. ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको. सो ऊपर वाले पार्ट को इट्स कॉल्ड एज
upper Ganga plains, then you have middle Ganga plains. Okay, इसके नीचे है lower Ganga, lower Ganga. So upper Ganga plains में important river है राम गंगा. So राम गंगा के जो flood plains है, it is called as Rohilkhand plains. And Ramganga is flooding the Jim Corbett National Park. इको को बंद करो ना. It's called as Rohilkhand plains. Okay. The middle Ganga plains में the important rivers are Mysore. So in the middle Ganga plains, eco. So middle Ganga plains, the important rivers are, okay, Gomti and Ghagra. Gomti and Ghagra. The Gomti and Ghagra together make up, इसके जो plains होते हैं, they're called as the Awadh plains. The Awadh plains are centered around लखनऊ. लखनऊ के आसपास है अवध प्लेन्स. नाउ अपर गंगा प्लेन्स जो है ना, ओके, दिस आर मोस्टली इन वेस्टर्न यूपी. वेस्टर्न यूपी में. एंड यहां पे जो एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद आएंगे मिडिल गंगा प्लेन्स. एंड मिडिल गंगा प्लेन्स का जो बाउंड्री है, ईस्टर्न बाउंड्री है, सो इट कवर्स मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न यूपी. सो ईस्टर्न यूपी या सेंट्रल यूपी मिडिल गंगा प्लेन्स में आएगा. एंड लोअर गंगा प्लेन्स, ओके, बिहार, ओके, इसके नीचे बंगाल भी आएगा. बिहार एंड बंगाल. एंड अपर गंगा प्लेन्स के इस तरफ you have Indus. These are the Indus plains. And दोनों के बीच में अंबाला है. The Ambala is acting as a water divide between the Indus catchment area and the Ganga catchment area. So in Bihar, the major river is Kosi, or lower Ganga plains में major river is Kosi. They are also called as Kosi plains. The Kosi is also called as the sorrow of Bihar because Kosi causes a lot of flooding. आप यहाँ पे कोसी का कोर्स देखो, आपको दिख जाएगा मैप्स में भी. देखो यहाँ पे. So this is the Kosi river. So it undergoes a lot of flooding. It is very notorious for changing its course. क्योंकि जब कोसी रिवर आती है ना, बहुत ही फास्ट आती है ऊपर से, हिमालय से. फास्ट आने के बाद when it suddenly enters the plains, अभी प्लेन्स में एंटर करने के बाद वो स्ट्रेट हो जाता है, ग्रेडियंट उतना नहीं है. तो क्या होगा, जितने भी वो डिपॉजिट्स लेके आया, so डिपॉजिट्स रास्ते में आ जाएंगे. So river will be coming. सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड, सो कोर्स चेंज हो गया. फिर से सेडिमेंट्स आ गए रास्ते में, कोर्स चेंज हो गया. सो इट इज वेरी नोटोरियस फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सॉरो ऑफ बिहार. एंड आजकल क्या हो रहा है ना, नेपाल में बहुत सारा प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट हो रहा है. ओके, द सेम रिवर, ओके, द कोसी रिवर इन नेपाल, इट इज कॉल्ड एज अरुण.
एंड अरुण के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहा है इंडिया. These are the HEP projects. These are all hydroelectric power projects, and India is constructing. And along with the hydroelectric power projects, a lot of deforestation is also taking place. Okay, जब deforestation जंगल काटे जाएंगे हिमालयस में, so क्या होगा, सिल्टेशन बहुत होगा, मिट्टी बहुत आएगी नीचे, एंड पूरा मिट्टी नदी में आएगी. एंड नदी की कैपेसिटी नहीं होती है इतना मिट्टी कैरी करने का, बिकॉज इसकी एनर्जी जो है ना थोड़ा लिमिटेड होती है जब प्लेन्स पे आने के बाद. तो इसलिए इट विल बी चेंजिंग इट्स कोर्स. ओके, इट इज कॉल्ड एज द सौरो ऑफ बिहार. एंड विद इन दिस लोअर गंगा प्लेन्स you also have Mithila plains, Anga plains, Magad plains. Okay, and in the Bengal, so these plains are often flooded. Means, okay, because at the end stage of the river will not be having much energy, so it will undergo a lot of braiding, and it causes lot of floods. And जब ये फ्लडिंग करता है ना, यहाँ पे भील्स फॉर्म होते हैं. ओके, द भील्स आर नथिंग बट, ओके, दिस आर द पॉन्ड्स, लोकल पॉन्ड्स. लोकल पॉन्ड्स में फिशेस बहुत ग्रो होते हैं, इसलिए बंगालीज बहुत सारा फिश क्यों खाता है, बिकॉज उनके पास अवेलेबिलिटी ज्यादा है. दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस. ओके, लोअर गंगा प्लेन्स. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. Yes, very good, Krishna. Okay, you have summarized everything. So this is about the Ganga plains. Next comes the Brahmaputra plains. Now these Brahmaputra plains are flowing in a narrow ridge because यहाँ पे है the Meghalaya plateau. Okay, ऊपर है the Himalayas, and the Himalayas will be having this syntaxial bend. Now this Brahmaputra will be coming as Sangpo. It's coming as Sangpo. यहाँ पे टर्न लेगा, टर्न लेके फिर ऐसा फ्लो करेगा. तो चाइना क्या कर रहा है? The China is building lot of hydroelectric power plants. Okay, in China में build कर रहा है. And in China this is called as Sangpo, or also called as Yerlung. Yerlung Sangpo बोलेंगे. And Yerlung Sangpo धीरे धीरे बनेगा Siang, and ये बनेगा Dihang, and it is entering the plains at Sadia. सदिया में प्लेन्स पे एंटर कर रहा है, एंड द प्लेस वेयर इट इज टर्निंग इनटू, ओके, टेकिंग ए टर्न एंड गोइंग इनटू बांग्लादेश, दिस इज कॉल्ड एज धुबरी. सो दिस सदिया टू धुबरी इज द मेन स्ट्रेच वेयर इट इज कॉल्ड एज ब्रह्मपुत्रा बोलेंगे इसको. ओके, ना आपने सुना होगा, ओके, जब भी मॉनसूनल सीजन आता है, आपने सुना होगा कि काजीरंगा या मानस नेशनल पार्क, वहां पे बहुत सारा फ्लडिंग हुआ है. ओके, बहुत सारे एनिमल्स मर गए, टाइगर्स मर गया या राइनोसेरस मर गया, आप सुना होगा. इट इज बिकॉज द ब्रह्मपुत्र फ्लोस बिटवीन द कंस्ट्रेन्ड वैलीज. तो जितना स्पेस इसको है, गंगा को है, उतना स्पेस ब्रह्मपुत्र के लिए नहीं है. तो गंगा वाला पार्ट देखो आप, बहुत ही ब्रॉड है. ओके, इट हैज ए वेरी लार्ज एरिया, कितना स्पेस है फ्लो करने के लिए. पर ब्रह्मपुत्र का इतना ही है, वेरी नैरो. एंड ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया. सो ब्रह्मपुत्र में पानी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू गंगा. सो since it is flowing between the constrained valley, it is often prone to flooding. इसलिए होती है
फ्लडिंग होती है। नाउ अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखो, ड्राइनेज पैटर्न देखो, जो भी रिवर्स हिमालय से आ रहा है ना, these are directly plunging because Himalayas की height on the eastern side is very high as compared to the western side. Okay, western side of the Himalayas में you see three distinct ranges. आपको ग्रेट हिमालयस दिखेगा 25 किलोमीटर्स विड्थ, मिडिल हिमालयस दिखेगा आपको 40 किलोमीटर्स विड्थ, यू हैव शिवालिक्स आल्सो। ओके, तीनों ही डिस्टिंक्ट दिखेगा, बट जब वो ईस्ट की तरफ आएंगे ना, तीनों ही रेंजेस एक रेंज में मर्ज हो जाता है। मर्ज होने के बाद उसकी हाइट जो है सडनली अपलिफ्ट हो जाती है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस सडन अपलिफ्टमेंट, द वाटर विच इज कमिंग into the Brahmaputra will be coming very fast, both height से आएगा तो सीधा आके it will come and plunge into Brahmaputra, सीधा आके मिलेगा। इसलिए the rivers which are coming from the north, the Himalayas, आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, इसका पैटर्न देखो, सीधा सीधा आ रहा है, दिख रहा है? You can see the lines here, they're directly coming and meeting the Brahmaputra. And such kind of a pattern, ये रिवर है, मेजर रिवर है, एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अगर ये सीधा आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रेलिस पैटर्न ऑफ ड्राइनेज। एंड इसके रिवर्स क्या है, ट्रिब्यूटरीज क्या है, विल सी लेटर। ओके, या सो मेनी ट्रिब्यूटरीज, बट सम वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आई विल टॉक अबाउट हियर। सो यहां से एक ट्रिब्यूटरी आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज तीस्ता। सो तीस्ता ओरिजिनेट्स इन सिक्किम, सिक्किम से आती है। वो ब्रह्मपुत्र को इंडिया में नहीं मिलता है, इट मीट्स ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश। सो दैट्स व्हाई इंडिया एंड बांग्लादेश हैव अ वाटर डिस्प्यूट्स ओवर तीस्ता, बिकॉज इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने तीस्ता के ऊपर एक डैम कंस्ट्रक्ट किया। This dam's name is Ghazal Doba Dam. So Ghazal Doba Dam, is in West Bengal, सिलीगुड़ी के पास है। So बांग्लादेश बोलता है कि भाई आप लोगों ने पूरा पानी रोक के रखा है। So हमारी जो प्रोविंसेस है, यहाँ पे रंगपुर प्रोविंस है बांग्लादेश में, वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है। ओके, इंडिया को रिक्वेस्ट करता है पानी छोड़ो थोड़ा। ओके, लोग वापस बदले में इंडिया को क्या मिलेगा? सो बांग्लादेश विल बी प्रोवाइडिंग द कनेक्टिविटी थ्रू द नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट रीजन देखो, नॉर्थ ईस्ट उतना दूर नहीं है, इट इज वेरी नियर, लेकिन डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है नॉर्थ ईस्ट के लिए। अगर बांग्लादेश डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, नॉर्थ ईस्ट बहुत ही नजदीक हो जाएगा। अगर नहीं भी प्रोवाइड करेगा, देन वी हैव टू टेक अ राउंड अबाउट, इतना दूर घूम के जाना पड़ता है। सो अगर आपको कलकत्ता से मणिपुर या नागालैंड जाना है, अराउंड 1500 to 1700 किलोमीटर्स अलोंग द चिकन नेक यू हैव टू गो। और बांग्लादेश प्रोवाइड करेगा कनेक्टिविटी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इट विल बी रिड्यूस टू 350 किलोमीटर्स। तो उससे क्या होगा, फिजिकल डिस्टेंस तो एक कम होगा, एंड साइकोलॉजिकल डिस्टेंस भी कम हो जाएगा बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड रेस्ट ऑफ द सो कॉल्ड मेनलैंड। बिकॉज अभी भी बहुत सारा द पीपल ऑफ द मेनलैंड आर नॉट मच अवेयर ऑफ द कल्चर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। सो अगर ये रोडवेज रेलवेज बन जाएंगे, देन नेशनल इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह हो पाएगा। ओके, अंडरस्टूड? नाउ the Brahmaputra, when it enters into Bangladesh, धूबरी क्रॉस होने के बाद इसको बोलते हैं जमुना। आफ्टर मीटिंग गंगा, सो गंगा भी आके मिलती है। आफ्टर मीटिंग गंगा, सो दिस इज कॉल्ड एज पद्मा। एंड फाइनली इन द एंड स्टेज, जब ये डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है, so this is called as मेघना। मेघना
So Jamuna, Padma and Meghna are the names of the Brahmaputra in Bangladesh. And एक और important aspect है यहाँ पे, एक रिवर आती है बारक रिवर। बारक रिवर सीधा जाके बांग्लादेश में मिलता है, लेकिन वो इंडिया में मणिपुर से मिजोरम से आती है। ओके, सो बारक के ऊपर इंडिया हैज बिल्ट ए डैम कॉल्ड एज तिपाई मुख डैम। तिपाई मुख डैम, इट्स इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, ऑलमोस्ट मणिपुर और असम के बॉर्डर में है तिपाई मुख डैम। एंड दिस इज ऑल्सो एन इरिटेंट बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। सो दो डैम्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक है गजल डोबा, दूसरा है तिपाई मुख डैम। सो दिस इज अबाउट द ब्रह्मपुत्र basin. So next you have the coastal plains of India. तो कोस्टल प्लेन्स दोनों तरफ है, वेस्ट में भी है एंड वो ईस्ट में भी है, लेकिन ईस्ट में थिकनेस ज्यादा है कोस्टल प्लेन्स का। क्यों? बिकॉज ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। So most of the rivers are flowing towards the east. When they flow towards the east, they'll be depositing a lot of sediments. इसलिए ईस्टर्न साइड में ब्रॉडर है। वेस्टर्न साइड में भी थोड़ा बहुत रिवर्स जाते हैं, लेकिन बस दो ही रिवर्स जाते हैं यहां पे, दैट इज द नर्मदा रिवर एंड तप्ती रिवर। So these two rivers are flowing towards the west because they are flowing in the rift valleys. Okay, whereas the tilt of the peninsular plateau is towards east. ईस्ट की तरफ टिल है, ढलान जो है ईस्ट की तरफ है, लेकिन वेस्ट की तरफ ये क्यों फ्लो हो रहा है? बिकॉज दे आर फ्लोइंग इन दी रिफ्टिंग। ओके, सो दिस इज अबाउट द कोस्टल प्लेन्स। ओके, एनी मोर डाउट यू हैव? Yes, Krishna, very good. Okay, regarding the mountains, rivers and tributaries, we'll talk in the next class. So next is the peninsular plateau. The peninsular plateau has many components. बहुत सारे components है peninsular plateau के। So firstly, I'll be talking about the Meghalaya plateau. So Meghalaya plateau is towards the east. Meghalaya plateau. So Meghalaya plateau is further divided into three parts. ये तीन parts में divide किया गया। That is Garo Hills, Khasi Hills, and Jaintia Hills. गारो, काशी एंड जैंतिया। गारो हिल्स में here on this side you have Nokrek Biosphere Reserve and Garo, Khasi and Jaintia tribes भी है यहाँ पे। So even in Meghalaya there are tribal conflicts. So शिलोंग जो कैपिटल है ना, the capital is located in Khasi Hills. शिलोंग यहाँ पे लोकेटेड है। सो मोस्ट ऑफ द पावर जो है, पावर सेंटर खासी के पास है। सो गारो एंड जैंतिया ट्राइब्स, दे आर लिटिल बिट डिससैटिस्फाइड, सो बिकॉज ऑफ विच इट इज लीडिंग टू ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स इन मेघालय। एंड खासी हिल्स में चिरापुंजी, मासेराम दोनों लोकेटेड है। दे हैव वेरी वेरी हाई रेनफॉल। वहां पे रेनफॉल होती है 1200 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सो डिस्पाइट हैविंग वेरी हाई रेनफॉल, दे आर आल्सो एक्सट्रीमली ड्रॉट प्रोन रीजन्स, बिकॉज इंडिया में जब बारिश आती है दैट रेन विल कम ओनली फॉर 4 months। 4 महीने बारिश होती है
बाकी जो 8 महीने हैं उसमें बारिश नहीं आता है। एंड चिरापुंजी मासेराम जो है वो हिल्स में है, सो दे आर अनेबल टू स्टोर वाटर, जितना भी पानी आता है वो बह जाता है। एंड बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन ना, द वाटर इज नॉट रिटेन्ड इन द हिल्स। अगर वहां पे जंगल होता है, then they will be acting as mini check dams, and they will also increase the infiltration in the soil, मीन्स ग्राउंड वाटर रिचार्ज में मदद करता है फॉरेस्ट। लेकिन आपने जंगल काट दिया तो ओवरफ्लो बहुत होता है, रन ऑफ बहुत होता है, सरफेस रन ऑफ। जब ये सरफेस रन ऑफ होगा, सरफेस रन ऑफ होगा, ओके, वो पानी को तो अपने साथ लेके जाएगा, पानी के साथ साथ मिट्टी को भी लेके जाएगा, thereby causing a lot of soil erosion also. Now मेघालय ऐसा स्टेट है, ओके, जहां पे पॉवर्टी लेवल्स बहुत हाई है, एंड मेघालय प्लेट्यू में कोल रिसोर्सेस अवेलेबल है, बट दिस कोल रिसोर्सेस कैनॉट बी एक्सप्लॉइटेड कमर्शियली बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। एक तो बहुत हाई रेनफॉल होता है, बिकॉज ऑफ द हाई रेनफॉल ना यू कांट वर्क इन द माइंस थ्रू आउट द ईयर, 4-5 महीने तो पूरा माइंड बंद रहता है। एंड सेकेंडली मेघालय प्लेट्यू में लाइमस्टोन बेड्स है, चूने का बेड्स है, एंड चूने के बेड्स के ऊपर स्टेबिलिटी नहीं रहती है। आप माइन खोदोगे वो पूरा लैंड कोलैप्स हो जाएगा। एंड ऑल्सो मेघालय इज इन 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे माइनिंग करने के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है, एंड वो पावर है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के पास विच आर ऑटोनॉमस रीजन्स, सो उनको स्पेशल पावर्स होते हैं, तो लोग उतना इजीली एग्री नहीं करते हैं। सो दैट्स व्हाई कमर्शियल एक्सप्लोटेशन ऑफ कोल इज डिफिकल्ट। लेकिन रिसोर्स है, पॉवर्टी है, तो क्या होगा? इलीगल कोल माइनिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज रैट होल माइनिंग, इज वेरी प्रोमिनेंट इन मेघालय। तो एनजीटी ने बीच में रोक लगाया था इसके ऊपर, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसको रोक नहीं पाया, बिकॉज अब रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और रिसोर्सेस है, तो एक्सप्लॉइट करेगा। लेकिन इसके कारण, इलीगल कोल माइनिंग के कारण, ए वन रिवर हैज बीन वर्स्ट अफेक्टेड, दैट इज कॉल्ड एज कापोली रिवर। ये नाम याद रखना, कापोली रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र विच हैज बीन वर्स्ट अफेक्टेड। नाउ मेघालय प्लेट्यू के साथ यू हैव 2 more hills here. This is Mikir Rengma Barel. So Mikir Rengma and Barel, they also belong to the peninsular plateau, but they have been separated from the Meghalaya plateau because of the differential erosion. Okay, वो थोड़ा पेनिनसुलर प्लेट्यू का हार्ड ग्रेनिटिक नीसिक रॉक से बना हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एरोडेड दैट इजीली। लेकिन जो बीच का जो पोर्शन है वो एरोड हो गया, इसलिए वो सेपरेट दिखता है, बट वो भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। ओके, ये मत समझना कि वो हिमालयस का पार्ट है, अटलस में मार्क करते हुए ध्यान रखना। ओके, अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट लेट्स कम टू द छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू का ईस्टर्न पार्ट जो है, ईस्टर्न पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज राज महल हिल्स। द राजमहल हिल्स हैव basaltic eruptions. They have basaltic eruptions. The southern edge of the plateau is called as the Garjat Hills, and this is all Chota Nagpur Plateau. The Chota Nagpur Plateau is further divided into 2 parts. Okay, so you have Hazaribagh Plateau in the north, and south में you have a Ranchi Plateau, and on this side you have Meghalaya Plateau.
इस तरफ है मेघालय प्लेट्यू। सो मेघालय प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू दोनों के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं माल्डा गैप। सो माल्डा गैप is also called as the Garo Raj Mahal Gap. गारो राज महल गैप। कुछ समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस स्टूडेंट्स। नाउ द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स बिकॉज इट इज एन एक्सपोज्ड बैथोलिथ। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाद में जब इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स करोगे तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है, एक सिंहभूम ध्यान रखना, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट को याद करना झारखंड में, एंड ओडिशा में सुंदरगढ़, कियोंझार, मयूरभंज। ओके, 3 डिस्ट्रिक्ट्स है। इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बहुत सारा मिनरल रिसोर्सेस मिलते हैं। ओके, so this is a Chota Nagpur plateau. So then comes the Eastern Ghats. Okay, Eastern Ghats. Now Eastern Ghats was once upon a time a fold mountain, but now it has become a discontinuous set of hills. So बहुत सारे छोटे छोटे हिल्स बन गए हैं। Okay? क्यों डिसकंटिन्यूअस बना? क्योंकि यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। सो दिस इज गोदावरी कृष्णा। तो गोदावरी कृष्णा ने बहुत बड़ा गैप क्रिएट किया ईस्टर्न घाट्स में, एंड सो these are the eastern ghats. These are called as the Malaya hills in Odisha, and they are called as Madugu Kondalu. Madugu Kondalu in Andhra Pradesh. So in this part of the Eastern Ghats, bauxite ore बहुत है, एंड यहाँ पे एक हिल है कॉल्ड एज नियामगिरी हिल्स। सो दिस नियामगिरी हिल्स is rich in bauxite, and the mining of the bauxite from the Niamgiri hills is affecting a tribe called as Dongriya Khond tribe को affect कर रहा है। Dongriya Khond. So Dongriya Khond एक PVTG है, it is particularly vulnerable tribal group, and there are 75 such tribal groups in India that's still into hunting and gathering. Then because of Krishna and Godavari, a gap is created, very big gap is created. उसके नीचे है नल्लामला। नल्लामला। So Nallamala में recently uranium की discovery also happened, and it also has a tribe called as the Chenchu tribe, which is also a PVTG. And then उसके नीचे है पालीकोंडा। पालीकोंडा, Palikonda is famous for Tirupati. And then you have Javadi Hills, and नीचे you have Chevroy Hills. And बीच बीच पे आपको रिवर्स मिलेंगे, such as नल्लामला और पालीकोंडा के बीच में you have a river called as पेन्नेरू रिवर। पालीकोंडा और जावेडी के बीच में यू हैव पालार रिवर। उसके नीचे जवाडी और शवराय के बीच में आपको मिलेगा पोनियर रिवर, एंड शेवरॉय के नीचे मिलेगा आपको कावेरी रिवर। एंड द अपर बाउंड्री ऑफ द ईस्टर्न घाट्स इज द महानदी रिवर। So today the Eastern Ghats are acting as the residual mountains or relict mountains.
So this is a physiography of the Eastern Ghats. Let's come to the Western Ghats. Western Ghats. The Western Ghats is almost continuous. It is not like the Eastern Ghats, it's almost continuous. But the northern part of the Western Ghats and the southern part, alag hai thoda. So northern ka part mein, it's mostly called as, in Maharashtra it is called as Sahyadri. Sahyadri बोलेंगे. And the southern part जो है, इसको बोलेंगे Southern Hill Complex. तो पहले Southern Hill Complex डिस्कस कर लेते हैं. So Southern Hill Complex में मेजरली आएगा नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, एंड नीलगिरी के बाद गैप है. दिस गैप इज कॉल्ड एज द पालघाट गैप, एंड उसके नीचे है कार्डमम हिल्स, आनेमलाई हिल्स एंड पालनी हिल्स. इसका डायरेक्शन ऐसे होगा थोड़ा. सो दिस इज कॉल्ड एज द पालनी हिल्स, एंड दिस इज the Cardamom Hills, and this is the Anaimalai Hills, and Palghat is the gap. So इसका जो formation है थोड़ा अलग है. Okay, so this formation is because of a phenomena called as upwarping phenomena. Upwarping, it is a epirogenic movement. It's a radial force. So this is not created because of any tectonic movement. It is called as a different movement called as epirogenic movement. So Krishna, Garjat Hills. Okay, good. You are summarizing everything. Nice. So within Cardamom Hills now, you have one more gap called as, this is शेनकोटा गैप बोलेंगे, नहीं तो इसको कोटलम गैप बोलेंगे. Okay. So rest of the things now we'll discuss in map pointing. वहां पे डिस्कस करेंगे. Okay. In Nilgiri is also biosphere reserve. And इस बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या टाइगर रिजर्व्स है, टाइगर्स का नंबर क्या है. सो दोस थिंग्स विल डिस्कस टुमारो और डे आफ्टर टुमारो. ओके, व्हेन द मैप पॉइंटिंग क्लास हैपेंस. नाउ रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, so this is then escarpment. ओके, और हम इसको ब्लॉक माउंटेन भी बोलेंगे. ब्लॉक माउंटेन है, एंड दिस हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द रिफ्टिंग. सो इसीलिए जो ब्लैक कॉटन सॉइल्स होंगे ना, ब्लैक कॉटन सॉइल्स आपको यहां मिलेगा, उसके नीचे नहीं मिलेगा. सो दिस इज ऑल्सो ए प्रूफ दैट द सदर्न पार्ट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रोसेस. अगर ये भी कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग की वजह से अगर क्रिएट होता सदर्न पार्ट, देन यू कुड हैव हैड ब्लैक सॉइल्स ओवर हियर, बट हियर यू हैव रेड सॉइल्स. दैट मीन्स इट हैज बीन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस. द वेस्टर्न घाट्स विल बी हैविंग ए स्टेप लाइक फॉर्मेशन टुवर्ड्स द ईस्ट. ईस्टर्न में एक स्टेप लाइक फॉर्मेशन है, and on the western side it is steep. And the step like formation is because जब यहाँ पे क्रैक आया था, each and every layer is corresponding to a different volcanic eruption. Because when the Indian Peninsular Plateau जब reunion hotspot के पास आया, then तब volcanic eruptions continuously नहीं हो रहे थे. जैसे कुकर से सीटी निकलती है ना, okay, वैसे ही volcanic eruptions हो रहे थे. These volcanic eruptions have taken place
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लाइक ओवर 2 मिलियन ईयर्स तक वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, लेकिन बीच बीच में गैप था, लाइक समटाइम्स 10,000 ईयर्स का गैप, समटाइम्स 5,000 ईयर्स का गैप, sometimes 30,000 years ka gap, and each and every layer here, it corresponds to one volcanic eruption, and these volcanic eruptions, subsequent volcanic eruptions, have created these formations called as the Deccan traps. And if you look at the thickness of the Deccan traps, कहीं कहीं 6 मीटर की thickness है, अगर बॉम्बे के पास जाओगे इसकी thickness होगी 1300 meters, 1.3 kilometers thick भी है. सो इसीलिए एक तरफ ये स्टीप होती है, दूसरी तरफ ये स्टेप लाइक फॉर्मेशन होता है. लेकिन व्हाट इज द फिनोमेना व्हिच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस? सो व्हेन यू आर हैविंग स्टीप साइड, एंड इस तरफ क्या है? स्टेप लाइक फॉर्मेशन है. नाउ ऑन दिस साइड you have rivers which are long and they carry a lot of sediments. Whereas on the western side, you have steep, it is very steep. That's why you have short, swift rivers. So western side में rivers का length छोटा होगा and they'll be directly plunging into the sea. सीधा समंदर में जाएगा. Whereas on the eastern side, the rivers are very long. That speed is low. धीरे धीरे मूव करेगा, and they'll be washing a very large area. बहुत सारा एरिया को कवर करके वॉश करके लेके जाता है. That's why the sediments are more. That's why you will be forming deltas. The deltas are formed on the eastern side, whereas on the western side, since the rivers are directly plunging into the sea, it will be forming estuaries. Therefore, Western Ghats is creating a perfect water divide in the form of the east flowing rivers and west flowing rivers. Acha, Sheshachalam hills, they are part of the Palikonda. यहाँ पे तिरुपति है ना. So those things I'll be discussing, okay, tomorrow, day after tomorrow, when we'll do map pointing ना, तब मैं डिस्कस करूँगा, okay, शेषाचलम and biosphere reserve के बारे में. So let me complete the physiography part and the monsoonal pattern part की बहुत important है. तो थोड़ा conceptual part कर लेता हूँ मैं. And so उसके बाद आएंगे ओके विंध्यास एंड सतपुरास. सो विंध्यास आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, लेकिन वेस्टर्न साइड ऑफ द विंध्यास नहीं दिखेगा, उतना नहीं दिखेगा, बिकॉज दे आर कवर्ड बाय द बेसाल्टिक इरप्शंस. जब बेसाल्टिक इरप्शंस हुआ था वो विंध्यास को वेस्टर्न साइड में ढक दिया था. सो ऑन द ईस्टर्न साइड द विंध्यास आर visible in the form of Vindhyan scarplands. These Vindhyan scarplands, they're called as the Kaimur range and the Bander ranges. Kaimur और बांदर के फॉर्म में ये दिखेगा. And the Satpuras are broken hills. So they are in the form of Rajpipla, Gavilgarh. ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखना है. सो दैट इज द महादेव हिल्स. महादेव हिल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बायोडाइवर्सिटी इज वेरी हाई. इट हैज गॉट वेरी गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, एंड यहाँ पे पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है. एंड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस, ईस्टर्न साइड में यहाँ पे you have Maikal range. Maikal range में you have Amarkantak plateau. Amarkantak plateau. And the Amarkantak plateau has radial drainage. Radial drainage. Radial drainage means it is the source of 3 important rivers. Okay? इस तरफ है
नर्मदा, ऊपर की तरफ है सोन रिवर, and towards the east you have Mahanadi river. This is called as radial drainage pattern. Sometimes they may ask you, this Maikal range is located between which two states? It is located between the Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Don't get confused. It is not located between Chhattisgarh and Odisha के बीच में नहीं है. वो confusion होता है बहुत सारे लोगों को. Okay. So this is about the Vindhyas and Satpuras, and between the Vindhyas and Satpuras, okay, you have the Narmada river, and below Satpuras you have Tapi river. So Tapi and Narmada are flowing here. And next, this is Aravali. So this is the Aravali range. So Aravali is a little bit broad in the south. South में थोड़ा broad है. So they'll be starting from Palampur. Palampur is in Gujarat. पालमपुर से लेके दिल्ली रिज तक जाता है, दिल्ली रिज, बट ये कंटिन्यूअस नहीं है. सर अजमेर के आसपास थोड़ा बहुत दिखने लगता है, ओके, उसके बाद फिर गायब हो जाती है, फिर दिल्ली के आसपास फिर से दिखने लगता है. सो दे आर नॉट दैट कंटिन्यूअस, एंड दिस हैव बीन फॉर्म्ड अराउंड 2.1 बिलियन ईयर्स एगो, बहुत पहले फॉर्म हुआ है. And now it is a relict mountain. Now if you are seeing the Rajasthan, ये है Rajasthan. So most of the Rajasthan is dry because Aravalli जो है ना, Aravallis are parallel to the mountain, parallel to the rain bearing winds, parallel जा रहा है. So rain bearing winds को block नहीं कर रहा है. So they're moving parallel, and these rain-bearing winds which are traveling parallel to Aravallis will be giving rainfall in the foothills of the Himalayas. But in the southern part of the Aravallis, Mount Abu region के आसपास ये अच्छा खासा rainfall cause करता है. क्यों? Because south में broad है, and it will be blocking the rain bearing winds. Okay. And on the eastern side of the Aravallis, ईस्टर्न साइड ऑफ द Aravallis, यहाँ पे इस रीजन में हैव मालवा प्लेट्यू. सो मालवा प्लेट्यू इज मोस्टली ड्राई रीजन, ड्राई है, एंड वंस अपॉन अ टाइम मालवा वाज हेवीली फॉरेस्टेड. यहाँ पे जंगल था मालवा में, लेकिन बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस and the deforestation, the Malwa has undergone extensive erosion, and it has given rise to the bad land topography. Means यहाँ पे बहुत सारा ravines create हुआ है because of excessive erosion, and this is called as bad land topography. And Chambal River is flowing through the Malwa Plateau. Okay, please explain escarpment and rifting. Okay. So this is the continental crust. So when below the continental crust, when you have an eruption, when you have a volcanic eruption,
So this is called as the mantle convecting cell. So जब ये ऊपर निकलता है, so it will be melting this continental crust. So after this stage, continental rifting होती है. So this is a continent. तो बीच का पार्ट जो है ना पतला हो जाता है क्योंकि वो मेल्ट हो जाता है. So this is when the rift is created. This becomes the rift valley. And this is a continent and this is a continent. Now, for a person who is standing in this rift valley, this part will appear like a mountain. Okay? So that's why this is also called as the block mountain. And बीच में rift valley है. And ये जो part है ना, this part is called as escarpment, also called as scarp face भी बोलते हैं इसको. All are same. Scarp face is टूटा हुआ part. Escarpment is nothing but block mountain. And the block mountain is also called as host. जर्मन में इसको होस्ट भी बोलते हैं. एंड जर्मन में रिफ्ट वैली को ग्रैबन भी बोलेंगे. ओके, समझ में आ गया मिस्टर हेमंत? Okay, talking about the rift valleys now. So this is how the Vindhyas will look like. So this is Satpuras and इस तरफ है Deccan Plateau. So this is Deccan Plateau. These are North Indian plains. North Indian plains. These are Vindhyas. These are Satpuras. एंड यहाँ पे इसके बीच में ना, यहाँ पे यह नर्मदा रिवर एंड दिस इज द तपी रिवर. नर्मदा है, ये तपी है. ओके, सो विंध्यास एंड सतपुरास बोथ आर ब्लॉक माउंटेन्स एंड नर्मदा एंड तपी आर द रिफ्ट वैलीज. राइट? इज इट क्लियर? Explain those terms. Which terms can you be specific? You're talking about these terms? See, ये continental crust है, ये टूट गया, right? It has been broken. So when you're applying force from both the sides, so one of the parts will be uplifted. This part will be uplifted. So this part will come up, right? And ये ब्लॉक ऊपर आ गया, ब्लॉक ऊपर चढ़ गया, इसलिए बोलेंगे इसको ब्लॉक माउंटेन. एंड ये वाला पार्ट जो है ना, ये टूट के ऊपर आया ना, इसको बोलते हैं एस्कार्पमेंट बोलेंगे. ये टूटा हुआ पार्ट को एस्कार्पमेंट बोलेंगे. ओके, एंड ब्लॉक माउंटेन को जर्मनी वाले होस्ट भी बोलते हैं. एंड ये क्या क्रिएट हुआ? ये एक रिफ्ट वैली है. And rift valley is also called as graben. Right? Understood? See, if you want more explanation regarding these things ना, we will do in the GS classes. वहाँ पे और डिटेल में करेंगे. अभी शॉर्ट टाइम में इनको सारे चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल ही होगा, बिकॉज अभी काइंड ऑफ रिविजन चल रहा है पीटी वालों के लिए. तो इसलिए थोड़ा मैं सारे चीज़ों को like I have to finish the entire syllabus like within 2 hours. So बाकी का जो एक्सप्लेनेशन है, यू कैन मैसेज में या मुझे कांटेक्ट करो, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा. So I'll go with the
Next part. So these are the physiographic divisions of India. Okay, so we have discussed the northern mountain complex, the Himalayas कैसे formation हुआ, then peninsular plateau. Okay, important components discuss किया, and then we have discussed the plains also. Then island territories, na? Island territories we'll discuss in map pointing. Along with the map pointing, we'll discuss that. Okay. Next, we'll discuss the monsoons. Monsoons and their theories. क्या theories है? See, monsoons are very easy to explain and they are very difficult to explain also. आप अगर छोटे बच्चे को पूछेंगे मॉनसून्स के बारे में, वो भी एक्सप्लेन कर देगा. आप 6th क्लास में या 7th क्लास में पढ़ोगे मॉनसून के बारे में, वो भी एक्सप्लेन कर देगा. हाउ? सो दे विल बी कॉलिंग इट एज ए सिंपल onshore offshore phenomena. See, during summers India is very hot. ये hot है. So when the India is hot, the air will rise over India. When the air rises, a low pressure is created over the Indian landmass, and the sea will be having comparatively high pressure. The sea will have high pressure. So the winds will be moving from sea to land. When they are moving from sea to land, they'll be bringing moisture and they'll be giving rainfall in India. Very easy to explain. It is nothing but, these winds are nothing but onshore winds. Onshore means they're coming from sea to land. So this is one direction of the wind. तो ये हो गया समर्स. अभी पूछेगा 6th क्लास के बच्चे को कि रिट्रीटिंग मॉनसून्स क्या है. तो विंटर्स में क्या होगा? विंटर्स में द इंडियन लैंड मास विल बी डेवलपिंग लो टेम्परेचर्स. विंटर में पूरा ठंडा हो जाएगा. इट विल डेवलप लो टेम्परेचर्स. जब टेम्परेचर लो होती है, प्रेशर विल बी हाई and the winds will be moving from this high pressure towards this low pressure, and winds are going in opposite direction, and these are the retreating monsoons. Retreating means वापस जा रहे हैं. So monsoons को explain करना बहुत ही easy है, and these are also called as offshore trade winds. Offshore means from land to sea. So this is very easy to explain. Next, let's see the other theories of the monsoons. So in these theories of the monsoon, I want to discuss about the role of the Tibetan plateau. And the next is the role of jet stream. It is tropical easterly jet stream, and the role of the Somali jet stream, and role of the subtropical westerly jet stream. Role of subtropical westerly jet stream. I'll be discussing all of this. Now before this, I want to help you in the preparation of the mind map. एक डिस्कस करूंगा because most of you here know, आपको पता है क्या चीज क्या है. मैं पहले एक माइंड मैप आपको ड्रॉ करूंगा. माइंड मैप पे क्या होता है? ओके, सारी चीजें एक ही पेज में आ जाएगा. ओके, now if I am discussing the features of the monsoons, discussing the features. The features क्या है? The first feature of the monsoon is the seasonal reversal of winds. Seasonal reversal of winds. You can call it as the 180-degree reversal also. Okay, this is the first feature. The second feature is the
floods and droughts are common. क्यों? Because 80% of the rainfall happens in 4 months. तो रेनफॉल का सीजन क्या है? फ्रॉम जून टू सितंबर है. तो जितना भी रेनफॉल है, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल हैपेंस इन दिस सीजन. एंड 8 मंथ्स, बाकी के 8 महीने हैं या ड्राई सीजन है. सो बिकॉज इट इज ड्राई, इसमें क्या होगा? ड्रॉट होगा. एंड एवरेज रेनफॉल इन इंडिया is around 118 centimeter per annum. So in terms of annual rainfall, it is good, decent enough, अच्छा खासा है, उतना बुरा नहीं है. लेकिन क्या हो रहा है? 80% रेनफॉल जो है 4 महीने में आ रहा है, बाकी के 8 महीने सूखे पड़े. The second feature. And next feature of the rainfall is the variability of rainfall. Variability. And in this variability, you have the spatial variability, means in terms of space variability, means हर जगह इंडिया में सेम रेनफॉल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल मेघालय में देख लो, चिरापुंजी मासाराम में, वहां पे मोर देन 1200 सेंटीमीटर रेनफॉल है. एंड अब राजस्थान में, लद्दाख में देखो, लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल है. तो स्पेशियल वेरिएशन बहुत है. एंड द स्पेशियल वेरिएशन इज गवर्न्ड बाय orography, because most of the rainfall is orographic in India, means जहां पे पहाड़ है वहां पे रेनफॉल होता है. So you clearly have a windward side and here clearly have a leeward side. Next, other variability is temporal variability, means in terms of time you have variability. सो अब जब रिवीजन करोगे बहुत ही आसान हो जाएगा. सो ऐसे आपको माइंड मैप्स बनानी चाहिए. इनफैक्ट हर एक टॉपिक के लिए अगर आप ऐसे मैप्स बना लोगे ना, आपके लिए रिवीजन करना बहुत ही आसान हो जाएगा. नाउ व्हाट इज दिस टेम्पोरल वेरिएबिलिटी? सो टेम्पोरल में यू हैव इंट्रा सीजनल वेरिएबिलिटी, मीन्स विद इन द सीजन, मॉनसून सीजन, तो जून से सितंबर तक, ओके, इस मॉनसून सीजन में भी वेरिएबिलिटी होगी. नाउ आप बताओ, इसमें फिल करना गैप्स आप तो, ओके, इसमें क्या आएगा, क्या रीजंस आएगा? कृष्णा, आप बहुत सारे आंसर कर रहे हो, इसमें बताओ. तो यू हैव इंट्रा सीजनल, यू हैव इंटर सीजनल, you also have inter-annual variability. Inter-annual. Now, intra-seasonal में, within the monsoonal seasons में, यहाँ पे आएगा MJO, Median Julian Oscillation आएगा, and role of the southerly branch, of subtropical westerly jet stream आएगा यहाँ. I'll explain ये सब क्या होता है. I'll explain. Firstly, I'll be drawing a mind map. इसमें किस चीज के बारे में डाउट है आप पूछ सकते हो स्पेसिफिकली. Next, you have interseasonal variability. So, interseasonal variability में you have the western disturbance, that is winter rainfall जो होती है, okay, ये अलग है, okay, western disturbance है, and retreating monsoon. And because of the retreating monsoons, इंडिया में हर जगह रेनफॉल नहीं होता है. कुछ पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे रेनफॉल होता है. सो दे कम इन इंटर सीजनल. नाउ इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी में यू हैव एनसो, दैट इज एल नीनो, ला नीना, सदर्न ऑसिलेशन, ओके. यू हैव इंडियन ओशियन डाइपोल आएगा इसमें. एंड देन यू हैव role of Tibetan heating, and role of Somali jet stream, and role of African jet stream. So
All these play important role in interannual variations. Okay. Now ये तो समझ में आ गया, ये क्या समझ में आ गया? So this is understood. I'll talk about, okay, I will start with the role of the IT-CZ radar. Okay. Now how IT-CZ will be playing an important role. Now IT-CZ is nothing but a zone of low pressure. So during summers क्या होता है? The low pressure is transferred to 30 डिग्री नॉर्थ तक ट्रांसफर होता है, इतना ऊपर आ जाती है. इनफैक्ट दिस लो प्रेशर कोर इज सेंटर्ड अराउंड पेशावर के आसपास. ये पूरा लो प्रेशर है. And this is called as the ITCZ. Since the low pressure is located here, the winds from the southern hemisphere, okay, mascarene, यहाँ से आती है winds. So this is called as the mascarene high. So from the mascarene high, the winds will be coming इक्वेटर की तरफ जाएंगे. इक्वेटर की तरफ जाने के बाद उनको वहां पे लो प्रेशर नहीं मिलता है, क्योंकि लो प्रेशर कहां पे है? ऊपर है. सो व्हेन दे कम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द रूल्स ऑफ द गेम चेंज, बिकॉज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द कोरोलिस डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स राइट. इस तरफ मुड़ जाता है. मुड़ने के बाद they'll pick up moisture from the oceans. तो इसमें पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल क्या है? See, in the oceans now, in the oceans, generally towards the western side of the oceans, you have warm waters. Warm waters. And the eastern side of the oceans, here you have cold waters. Cold waters. And this is creating a polarity. That's why it is called as a dipole. So when you have the warm waters here, then it will induce more evaporation. So गर्म पानी होगा तो vapor बहुत सारा आएगा. And this vapor will fill the air with moisture. बहुत सारा moisture होगा. And जो भी हवा जो mascarene से आ रहा है, that will pick up the moisture and will take towards India. And this is called as the positive IOD. अभी negative IOD में क्या होगा? Instead of a warm pool here, यहाँ पे आएगा ठंडा पानी. जब यहाँ पे ठंडा पानी आ जाएगा, then it will suppress the evaporation. Evaporation उतना नहीं होगा, moisture उतना नहीं होगा sea के ऊपर. So it will suppress the evaporation, and the winds which are blowing towards India will be having less moisture. Basically, this pole is reversed. So this is the negative IOD. So instead of a cold pool, you have a warm pool. Instead of a warm pool, you have a cool pool. So this is the negative IOD. So during the negative IOD, the rainfall towards India will be less. So this is the role of IOD, Indian Ocean Dipole, in the monsoons. Is it clear, everyone? Dipole clear है क्या? Now let's see what is the El Nino and La Nina phenomena. Okay, good. सब लोग तब तक कोई कमेंट नहीं कर रहा है. सोचा कि सब लोग सो गए क्या? Are you guys there?
Now see, so this is the ocean. In the upper part of India, upper part of the ocean will be having warm waters. ऊपर के हिस्से में warm waters रहेगा. Because this is where the sunlight is reaching. जब तक sunlight आती है, वहां पे you have warm waters. And नीचे ना, you'll be having uniformly cold waters. So these are all cold waters. So in the tropical seas, when the winds are blowing, when the winds blow, ऊपर का जो गर्म पानी है एक तरफ आ जाएगा. It's like, see, आपके पास दूध है, दूध के ऊपर मलाई है. अब जब दूध के ऊपर फूंक मारते हो, क्या होता है? पूरा मलाई एक तरफ आ जाता है. ओके, सो जब यहां से ट्रेड विंड्स फ्लो करते हैं, so these are the trade winds. When the trade winds are blowing, the warm waters pile up on one side. Warm waters एक तरफ आ जाएंगे. They get piled up. And this phenomena is called as, इसको बोलेंगे, नीचे की तरफ पुश करेगा पानी को. That's why it is called as डाउनवेलिंग बोलेंगे इसको. जब नीचे की तरफ पानी को पुश करेगा, तो यहां पे जो ठंडा पानी है ये ऊपर आ जाएगा, इस तरफ ऊपर आ जाएगा. एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज अपवेलिंग. एंड जब पानी नीचे से ऊपर जाता है, जब अपवेलिंग होती है, it will also bring the nutrients from the ocean bottoms to the surface. जब ये nutrients photic zone में जाएंगे, जहाँ पे sunlight मिलती है वहाँ पे जाएंगे, then the phytoplankton growth will take place and it will help in creating good fishing grounds. आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पे भी upwelling होती है वहाँ पे good fishing grounds होते हैं. So there's one question, when is the speed of the winds most? When, if you are asking, La Nina में speed ज्यादा होती है, okay, not El Nino. Okay, मैं वही समझा रहा हूँ, El Nino लाना ही समझा रहा हूँ. तो ये होती है डाउनवेलिंग, ये होती है अपवेलिंग. सो जहां पे डाउनवेलिंग होगी, यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा होता है. तो गर्म पानी से क्या होगा, एयर evaporate होने लगेगा. And on the surface you have low pressure. And in the upper troposphere, यहाँ पे wind इकट्ठा हो रहा है. That's why in the upper troposphere you have high pressure. तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ ठंडा पानी है. जब ठंडा पानी होता है, the air has the tendency to shrink. Okay, ये sink करेगा. That's why you'll be having sinking conditions here. जब ये sink करेगा, ज्यादा हवा इकट्ठा हो रहा है सरफेस के ऊपर, सरफेस क्रिएट्स हाई प्रेशर एंड हियर ए लो प्रेशर इज क्रिएटेड इन द अपर ट्रोपोस्फियर. एंड ऑन द सरफेस, समंदर के सरफेस के ऊपर, द विंड विल बी मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड हियर भी इट विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो देयर इज दिस सर्कुलेशन. And when the wind is moving up here, so here it will be creating clouds. जब convection होगा, clouds create होगा, and जहाँ पे downwelling होगी वहाँ पे rainfall होती है. and जहाँ पे sinking होगा, यहाँ पे क्या होगा, drought condition होगा. and this phenomena is happening in all the oceans. Now let's apply this phenomena in the Pacific Ocean. Pacific Ocean में apply करते हैं phenomena. The Pacific Ocean में भी same phenomena occur होगा. So the warm waters will be piled up here. यहाँ पे गर्म पानी आएगा. So this will be creating a warm pool. Because of the warm pool, Australia and Indonesia
will be having rainfall. रेड कलर यूज कर रहा हूं, मतलब इसका मतलब है गर्म पानी है. So here in Peru, across the coast of Peru, you have upwelling. That's why you have cold waters. So because of the cold waters ना, यहाँ पे create होगा drought conditions. Drought conditions create होगा and upwelling भी create होगा. Drought conditions and upwelling. And surface के ऊपर कौन से winds है? ये surface के ऊपर trade winds है यहाँ पे. Trade winds are flowing. Now कभी कभी क्या होता है ना, ये ट्रेड विंड्स की स्पीड जो है ज्यादा हो जाएगी. जब ट्रेड विंड्स का स्पीड ज्यादा होगा, ज्यादा गर्म पानी इस तरफ जाएगा. सो यहां पे ज्यादा गर्म पानी इकट्ठा होता है. दिस पूल बिकम्स लार्जर. ये पूल बड़ा होता है. जब ये पूल बड़ा होगा, ज्यादा गर्म पानी इकट्ठा हो जाएगा. When a larger pool is created, then more amount of moisture will be going into the upper troposphere. When more moisture goes into upper troposphere, Australia will be having floods. ज़्यादा बारिश होगा. Instead of normal rainfall, Australia will have floods. Now, जब ये ज़्यादा यहाँ पे डाउनवेलिंग हो रही है, उस तरफ क्या होगा? ज़्यादा अपवेलिंग होगा. जब ज़्यादा अपवेलिंग होती है, यहाँ पे जो पूल है, ये पूल भी बड़ा हो जाएगा. When you have more cold waters accumulated here, when there is more upwelling of the coast of Peru, then air ज़्यादा sink होने लगेगा. So because of more sinking air, extreme drought is created. Drought conditions ज़्यादा होंगे. And this phenomena is called as La Nina. So La Nina means the girl. El Nino means boy. मतलब यहाँ पे लोगों को कैसे पता चलता है कि इस साल कम बारिश होगा, ज्यादा बारिश होगा? अभी नॉर्मल टाइम में नॉर्मल ठंडा पानी रहता है पेरू में. तो क्रिसमस के टाइम में क्या होता है, पेरू के लोग जो है वो लोग समुद्र में जाते हैं. ओके, सम रिचुअल प्रैक्टिस. तो समुद्र में जाएंगे, अगर पानी नॉर्मल ठंडा है, देन ओके बोलेंगे इस बार ड्रॉट आएगी. लेकिन नॉर्मल से अगर ज्यादा ठंडा है, देन सीवियर ड्राउट आएगा. ओके, अगर नॉर्मल से गर्म है, देन उस टाइम क्या होगा, पेरू में फ्लड आएगी. फ्लडिंग कंडीशंस क्रिएट होगा. सो दिस इज हाउ द पेरुवियन पीपल आर एबल टू प्रेडिक्ट द क्लाइमेट. एंड जब भी ये गर्म होता है, देन दे कॉल इट द बॉय. दैट मीन्स the Peru is going to get floods, Australia is going to get droughts, and India is also going to get droughts. And जब normal से ठंडा होता है, Peru will have extreme droughts, Australia will have lot of floods, and India will also have floods. The relationship between El Nino and La Nina, okay, I'll discuss in some time how exactly it is happening. ओके मुझे पहले बताओ, ये क्लियर हो गया क्या लानिना इवेंट? सो लानिना के टाइम पे ट्रेड विंड्स की इंटेंसिटी है वो ज्यादा होती है. इज इट क्लियर? ओके, नाउ अभी क्या हुआ रिसेंटली? So this El Nino and La Nina events, they generally occur for 7 months. Okay, इसका cycle होता है. Earlier there used to be a fixed cycle, but nowadays what is happening is that because of the climate change, this cycle is not followed. अगर short term period के लिए कोई भी एलनीना या लानिना कंटिन्यू होता है, इट इज कॉल्ड एज एलनिनो और लानिनो इवेंट. शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए
It is called as event. And if it is continuing for long term, it is called as episode. It is called as episode. Now, आजकल आपने सुना होगा triple dip La Nina. You must have heard this because 2020 is an La Nina, 2021 is La Nina, and 2022 is also La Nina. तीनों ही La Nina. एंड इतना लंबा La Nina कभी नहीं आया था. एंड इसलिए आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि तीनों साल में बारिश अच्छा खासा हुआ है इंडिया में, कमी नहीं हुई बारिश की. So 3 consecutive years you have this La Nina. That's why it is called as the triple dip La Nina. Abhi scientists are saying that 2023 is going to be El Nino year. So El Nino में क्या होता है? El Nino में the average temperatures of the surface of the earth will increase. Okay, हर जगह there will be more instances of forest fires, ज़्यादा droughts आएंगे, and there will be a large scale destruction of the coral reefs also. And अभी ये prediction है because 3 साल El Nino बहुत हो गया, अभी आएगा 3 साल La Nina बहुत हो गया, अभी आएगा एल नीनो. किस बेसिस पे बताया कि ये एल नीनो का इवेंट है, एल नीनो का साल है? बिकॉज इस बार आपने ऑब्जर्व किया होगा फरवरी में द टेम्परेचर्स वर मोर देन एवरेज, मार्च में भी मोर देन एवरेज टेम्परेचर्स, लेकिन अप्रैल महीने में आपने देखा होगा इवन इन मे द टेम्परेचर्स आर कंपैरेटिवली लोअर, उतना हाई टेम्परेचर्स नहीं है. एंड ये जो बारिश आ रही है आजकल, बारिश आ रही है लास्ट 10-15 डेज से जो बारिश आ रही है, क्यों आ रही है बारिश? दिस रेनफॉल is because of the phenomena called as the western disturbance. Okay, is the El Nino La Nina clear or should I explain more? Clear हो गया? Any more doubts in El Nino La Nina? You can ask, because I'm going to western disturbance now. So let's see what is this western disturbance. See, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था what is this subtropical westerly jet stream. The subtropical westerly jet stream will be meandering, and this jet stream so this will meander, and while it is in the Atlantic Ocean, it will pick up the remnants of temperate cyclone. तो टेम्परेट साइक्लोन को कैच करेगा, टेम्परेट साइक्लोन को खींच के लेके जाएगा, खींच के it will pick up moisture from the Mediterranean Sea, and then this temperate cyclone will be dragged towards India. and यहाँ पे इंडिया की तरफ आने के बाद यहाँ पे है पामीर नॉट. So पामीर नॉट is an intermountain plateau, बहुत ही अच्छी खासी हाइट में है. जब ये हवा आती है ये पामीर को टकराने के बाद it will split into 2 branches. ओके, एक होती है नदरली ब्रांच, दूसरा होता है सदरली ब्रांच. से टकराने के बाद it will give बारिश, it will give rainfall along the foothills of the Himalayas. Okay, and this is called as the western disturbance. इसका नाम western disturbance क्यों है? Because it is coming from the west. Now आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी ये बारिश हो रही है टेम्परेचर बहुत ही ड्रॉप हो गया, कुछ ज़्यादा ही ड्रॉप हो गया. क्यों? क्योंकि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है इट इज ड्रैगिंग
the remnants of temperate cyclones. And temperate cyclones are made of the cold and warm air mass. So इसमें cold air mass means polar region का जो हवा है वो भी इस तरफ आ रहा है. जब पोलर रीजन की हवा इंडिया की तरफ आएगा देन ऑब्वियसली टेम्परेचर्स क्या होगा, टेम्परेचर्स ड्रॉप हो जाएंगे. इसलिए सडन डिप इन द मेरिक्यूरी. ये मई का महीना चल रहा है, फिर भी आपने ऑब्जर्व किया होगा टेम्परेचर बहुत ही ड्रॉप हो गया. सो इट इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. ओके, now one more feature of this subtropical westerly jet stream is अभी तो ठंडा चल रहा है लेकिन अब थोड़े दिनों के बाद फिर से गर्मी आ जाएगी. सो मई के महीने में, इन द मंथ ऑफ मई, इंडिया विल बी वेरी हॉट. इट विल बी वेरी हॉट. सो डिस्पाइट हैविंग हाई टेम्परेचर, द मॉनसूनल विंड्स आर नॉट कमिंग टुवर्ड्स इंडिया. इंडिया में मॉनसून नहीं हो रहा है बिकॉज जब हाई टेम्परेचर होगा तो ITCZ जो फॉर्म होना चाहिए, लेकिन मई महीने में फॉर्म नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो रहा है. इसका जो सदरली ब्रांच है, इस सदरली ब्रांच विल क्रिएट हाई प्रेशर कंडीशंस ओवर इंडिया. मीन्स ये सदरली ब्रांच जो है ऊपर से हवा नीचे भेज रहा है और नीचे हवा को दबा रहा है. बिकॉज ऑफ दिस हाई प्रेशर इज क्रिएटेड ओवर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स. एंड जब तक इंडिया में ए हाई प्रेशर होगा, दिस साउथ वेस्टर्न मॉनसून्स विल नॉट बी कमिंग टुवर्ड्स इंडिया. गर्मी तो है, ITCZ फॉर्म करने के चांस तो है, लेकिन दैट इज सरपास्ड, दैट इज ओवरपावर्ड बाय द जेट स्ट्रीम. लेकिन जब सूरज ऊपर की तरफ आएगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा, देन द प्रेशर बेल्ट्स विल आल्सो शिफ्ट. सो धीरे धीरे ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है धीरे धीरे क्या होगा, ये पामिर नॉट के नॉर्दर्न डायरेक्शन में चला जाएगा. इट विल बी कंप्लीटली मूविंग इन नॉर्दर्न डायरेक्शन. यू विल नॉट हैव एनी सदर्न, will not have any southern branch. So then obviously in the month of May and June India is very hot. तो तब क्या होगा, जिस दिन ये सदरली ब्रांच पूरा डिसअपियर होकर चला जाता है तो हाई प्रेशर भी गायब हो गया. जब ये हाई प्रेशर गायब होता है, ये जो मॉनसून बेरिंग विंड्स है ये इंडिया की तरफ आने लगते हैं. मीन्स एक्चुअली दिस मॉनसून बेरिंग विंड्स आर वेटिंग हियर, वेट कर रहा है. जब इंडिया के ऊपर हाई प्रेशर गायब हो तब वो सडनली एंटर करेगा. एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज सडन बस्ट इन द मॉनसून्स. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज सडन बस्ट इन द मॉनसून्स. That's why you must be hearing the news that the southwestern monsoons have finally hit the India on 31st of May, so or 1st of June. ऐसा सुना होगा आपने. तो जनरली कब होता है सडन बस्ट? लास्ट वीक ऑफ मे और द फर्स्ट वीक ऑफ जून. कभी कभी बहुत अर्ली भी हो जाता है. मीन्स बहुत अर्ली हुआ था 17th ऑफ मे में. 17th ऑफ मे में चालू हो गया था मॉनसून्स केरला में. ओके, एंड लेट होता है, कभी कभी लेट भी होता है. एंड लेट कब तक हुआ? ये 17th ऑफ 14th of June. So it can be as late as 14th of June. It can be as early as 17th of May. So this is called as the sudden burst in the monsoons. So what is this Somali jet stream? So Somali jet stream is a wind which is originating in the north of Madagascar. It is moving into Mozambique channel.
एक केन्या की तरफ जाएगा, सोमालिया की तरफ जाएगा, देन मुड़ेगा, फिर इंडिया की तरफ आएगा। एंड यहाँ पे क्यों मुड़ रहा है? बिकॉज यहाँ पे इथोपियन हाईलैंड्स है। अभी इसके बारे में किसी को ज्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज नन ऑफ द कंट्रीज हियर आर एबल टू इन्वेस्ट सो मच इन रिसर्च, इसलिए उतना इसके बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं है। लेकिन जब भी ये सोमाली जेस्ट्रीम आती है इंडिया की तरफ, ज्यादा रेनफॉल लेके आती है। सो दिस इज द रोल ऑफ सोमाली जेस्ट्रीम। सो नेक्स्ट इज अफ्रीकन ईस्टर्ली जेस्ट्रीम। अफ्रीकन ईस्टर्ली जेस्ट्रीम। सो ये भी एक अजीब सी जेस्ट्रीम है। एनसीईआरटी में ये लिखा है कि इट इज फ्लोइंग समवेयर बिटवीन 8 डिग्री टू 20 डिग्री, सेंटर्ड अराउंड 15 डिग्री। इसे जेस्ट्रीम ऐसे फ्लो कर रही है, मीन्स ये साउथ ईस्ट एशिया से एमर्ज होती है एंड अफ्रीका की तरफ फ्लो होती है। एंड जब ये जेस्ट्रीम यहां से बह रही है, तो जो भी साइक्लोन्स होगा बे ऑफ बंगाल में, इट विल बी कमिंग टुवर्ड्स इंडिया। एंड जो भी हवा होगी, मॉइस्चर लैडन विंड्स होंगे, दे विल बी कैरीड टुवर्ड्स इंडियन लैंड मास। So this is the role of the African stream. Now let's see what is the role of the Tibetan plateau. So Tibetan plateau, we'll see. See, Tibetan plateau is a highland. 4 किलोमीटर की हाइट है तिब्बतन प्लेट्यू की. So because of its height, the Tibetan plateau gets heated excessively. बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव हीटिंग बहुत गर्म हो जाता है. गर्म होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे हवा राइज होती है. सो द एयर विल राइज, द एयर इज राइजिंग ओवर द तिब्बतियन प्लेट्यू. राइज होने के बाद ओके इट विल स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स द मडागास्कर. इट विल कम इन द अपर ट्रोपोस्फियर, इट विल स्टार्ट मूव टुवर्ड्स द मडागास्कर and it will sink in the Madagascar. And after sinking in the Madagascar, it will create a high pressure. So anyways in Madagascar it will be having high pressure, and from the Madagascar the winds will be moving towards India. So जितना हीटिंग होगा तिब्बत में, उतना ही हवा राइज करेगा एंड उतना ही हवा सिंक करेगा टुवर्ड्स Madagascar. एंड सिंक करने के बाद हाई प्रेशर की इंटेंसिटी उतना ही बढ़ेगी एंड उतना ही हवा फिर इंडिया की तरफ आएगा. सो मोर इज द तिब्बतियन हीटिंग, मोर इज द मॉनसूनल पैटर्न. सो दिस इज द रोल ऑफ द तिब्बतियन हीटिंग. एंड ये जो हवा आ रहा है तिब्बत से मस्करिन की तरफ, विच इज ट्रैवलिंग इन द अपर ट्रोपोस्फियर, it is also called as tropical easterly jet stream, also called as TEJS. This tropical easterly jet stream is also playing a very important role in the Indian monsoons. So I hope all these are clear here. जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, एक बार देख लेना सारे टर्म्स. So western disturbances clear हो गया. I'll discuss what is this rotating monsoon. ENSO is El Nino and La Nina. Indian Ocean is discussed. Tibetan Plateau भी discuss किया, Somali भी just discuss किया, and African Jestim भी discuss किया. Now, what is this MJO? Madden-Julian oscillations. So Madden-Julian oscillations are nothing but the clouds. Okay, अगर ये अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड एक क्लाउड्स घूमते रहते हैं. ये क्लाउड्स आर क्रिएटेड ओवर ITCZ. बेसिकली ITCZ के ऊपर क्लाउड्स होता है, एंड दिस क्लाउड्स हैव ए साइकिल ऑफ 30 to 60 days. एंड जब भी ये क्लाउड एक्टिवेट होते हैं, देन रेनफॉल इज रिसीव्ड. सो दिस इज कॉल्ड एज द मैडन-जूलियन ऑसिलेशन. सो मैडन-जूलियन ऑसिलेशंस कैन ऑल्सो इनिशिएट साइक्लोन्स. अगर जब यहाँ पे साइक्लोन फॉर्म होने का चांस है, उसके अंदर एक क्लाउड चला गया, देन
वहां पे बारिश भी बहुत ही इंटेंसिटी हो जाएगी. And when these clouds are created, a excessive low pressure is created on the surface. Because clouds क्यों create हो रहा है? Because नीचे से जब हवा ऊपर जा रहा है तो ऊपर clouds create हो रहा है. This means नीचे से हवा खींच के ऊपर जा रहा है. So जमीन के ऊपर कौन सा pressure create होगा? Low pressure create होगा. And this low pressure is giving rise to the cyclones. Okay. कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो आप. So, इसमें कोई डाउट्स है क्या किसी के लिए? Anyone? So this is the mind map of the monsoons. If you are having any doubts in this, you can ask. So let me discuss what is this retreating monsoons also. So retreating monsoons, and जब भी आप retreating monsoons draw कर रहे हो, ये चीज ध्यान रखना आप. These winds are always moving parallel to the coast like this. Because during winters, the northern India develops high pressure. And the winds are moving from the high pressure to low pressure. Because अभी low pressure कहाँ गया? Low pressure जाता है southern hemisphere में. तो यहाँ पे low pressure चला गया. So winds फिर वापस जाएगा. ये वापस जाने का जो फिनोमिना है, it is called as the retreating monsoons. And जब ये retreating monsoons होगा, so only some parts of India will be having the onshore winds. So especially this part means the winds are coming from the oceans to the continent. So these become onshore. So that's why the southern parts of the Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and parts of Karnataka, and sometimes in Kerala also, you will get rainfall. So this is called as the retreating monsoons. I hope you know everything regarding the monsoons is clear to you. Any more doubt you're having? No? Okay. So rest of the things, okay, I will discuss like a day after tomorrow. I'll be meeting you again. So I'll discuss the world mapping, and when Indian mapping comes now, I'll discuss the current locations, the locations which are associated with the current affairs, and also I will discuss the some of the other phenomena which has been left. Okay, thank you. Okay, all the best. Southern branch तो वही है ना. ये जो जेट स्ट्रीम जब भी आता है, जब वो पामिर नॉर्थ से टकराता है, it will be creating the southern branch. The southern branch is responsible for high pressure on the surface. Understood? Kayamat. Okay. Okay, please tell me about AMOC. Very good question. Okay, I'll take some time to discuss what is AMOC. So AMOC समझने के लिए So this is the continent. Okay, मैं आपको इन दूसरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसके बाद आप AMOC समझोगे. So this is the continent. And continent के ऊपर होती है ice sheet. So this is the ice. And ये सब बाकी सब पानी है. So this is all water. So during winters, what happens is that during winters,
the water becomes ice. So thickness of the ice will be increasing. आइस का थिकनेस बढ़ता रहेगा. जब आइस का थिकनेस बढ़ेगा, इस समुद्र के पानी में जो नमक है, वो नमक आइस में नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा. And this is also called as the brine solution. And this phenomena is called as brine rejection or brine ejection बोलेंगे इसको. Brine rejection or brine rejection. So when this salty water, when it is going to the bottom of the ocean, it creates a water mass. This creates a water mass. Okay. And this water mass will go to the bottom of the oceans. Now let's come to the AMOC. So northern part of the Atlantic में क्या होता है, यहाँ से Gulf Stream आती है. So from here the Gulf Stream will be coming. The Gulf Stream will be bringing saline waters, because warm water में salinity ज़्यादा होती है. It will bring saline waters. At the same time, in the Greenland and Iceland during winters, ice formation is taking place. So because of the formation of the ice, the brine rejection is taking place in the polar region. And ये वाला नमक का पानी, वो वाला नमक का पानी, दोनों ही heavy होंगे. Heavy होने के बाद, both of these waters will be sinking to the bottom of the oceans. So they will sink the bottom of the oceans. After sinking, they'll be creating something called as Antarctic deep water mass. This Antarctic deep water mass, it will flow along the MOAR. So it will start flowing along MOAR. तो जाएगा धीरे धीरे. It will go till Antarctic. And Antarctic जाने के बाद Antarctic में भी ice formation हो रहा है. And here also the Antarctic bottom water mass is created. And these two water masses from the bottom of the oceans, they will start moving towards the east. One of the branches will be coming to the Indian Ocean and they will start upwelling in the Wharton Basin. Upwelling होके फिर वापस जाएगा. And the other branch will move along the Southern Ocean. It will move and then it will move towards the north and Northern Pacific जाके फिर से upwelling होगा. फिर ये water mass फिर ऊपर से surface flow, okay, it will be going back to the Atlantic Ocean. And these are called as deep ocean currents, are also called as the thermohaline currents. Now this part of these thermohaline circulations in the Atlantic are called as AMOC. So nowadays it has been observed that this AMOC is slowing down, slow हो रहा है. तो जितना फास्ट से वो मूव करना चाहिए उतना फास्ट मूव नहीं हो रहा है. अगर ये स्लो डाउन हो जाएगा तब क्या होगा? तो यहाँ पे ज़्यादा गर्म पानी इकट्ठा हो रहा है और नीचे नहीं जा रहा है. जब ज़्यादा गर्म पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, देन यहाँ पे पोलर रीजन में जो आइस है वो मेल्टिंग होने लगेगा. So this can be attributed to the climate change. And AMOC, okay, in fact AMOC is a part of the thermohaline currents, also called as the deep ocean currents. It's a phenomena by which the temperature and salinity balance will be taking place. नहीं तो ओशन के डीप में क्या है? ठंडा पानी है, ओशन के ऊपर गर्म पानी है. ये दोनों मिक्स होना चाहिए, बिकॉज नेचर में सब कुछ बैलेंस होना चाहिए. So these thermohaline circulations are the way to balance the salinity and temperature. Understood? Is it clear, Preetam? Acha, Preetam. Okay, you are the one. Understood?
Okay, any more doubts if you have, you can ask. So Preetham has one more doubt. Can we say global warming is weakening AMOC and it is creating a positive feedback loop? A very good question you are asking. Yes, इससे क्या होगा? Good question. See, what is this positive feedback loop? Is that so when more warm water is getting accumulated here, it will be melting more ice. When it will be melting more ice, more fresh water will be added. When more fresh water is added, the tendency of this saline water to sink to the bottom will again become less. Again वो ज़्यादा slow down हो जाएगा. जब ज़्यादा slow down होगा, again more warm waters will be accumulated, and this is called as the positive feedback. Good question. Lekin I don't think UPSC will be going this deep into positive feedback and negative feedback loops. So as far as the prelims is concerned, if you know what is AMOC, if you know it is a way by which the salinity and temperature is balanced, then it's okay, more than enough. Other than this, okay, nothing much is required. Okay. और कुछ doubts है क्या? Is everything clear? So rest of the things, I hope this session has helped you. Okay, in brushing up the Indian physiography and the Indian monsoonal pattern. The rest of the things which are remaining we can discuss later. Okay. Thank you. Thank you so much.